classification of viruses is a very important topic. First, we can classify them into DNA and RNA based on what is the genetic material of the virus. If the genetic material is DNA, it is called as DNA. If the genetic material is RNA, it is the RNA classified virus. Now we know that some viruses have an envelope surrounding the capsid, whereas some viruses do not have an envelope surrounding the capsid. Those who have the envelope, they will be called as enveloped virus, and those without the envelope will be called as non-enveloped virus. So in total, we are having 4 classification. First is the DNA enveloped, then is the DNA non-enveloped, third is the RNA enveloped, and fourth is the RNA non-enveloped. Let's start with DNA enveloped virus, which we can now remember by the mnemonic HHP. H से सबसे पहले H से क्या होगा? Hepatitis B, that is hepadina virus. Second H से क्या होगा? Herpes virus. P से क्या होगा? Pox virus. Remember, pox is box. It is the largest virus. Now come to DNA non-enveloped virus, जिसका mnemonic है PAP. P से क्या होगा? Parvovirus. Remember, HPV. Okay, so parvovirus, HPV, and A से क्या है? Adenovirus, right? Now come to last one, that is RNA non-enveloped virus, which is given by the mnemonic PCR. P मतलब पिकॉर्ना, C मतलब कैल्सी, R मतलब रियो. पिकॉर्ना में क्या क्या आता है? पिकॉर्ना में HAE आता है. We should remember others also. P for picorna, P for polio, and cocci और enterovirus. C for calci, इसमें HEV आता है, कैल्सी ई मतलब HEV, नोरा एंड सैपो वायरस. और लास्टली रियो में आता है रोटा वायरस. रोटा वायरस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इट इज कंटेनिंग डबल स्ट्रैंडेड RNA. वी नॉर्मली नो दैट RNA is single stranded, but rotavirus has double stranded RNA. Last classification is RNA enveloped virus, which you will remember by the mnemonic RFT and others. R से क्या है? रेट्रोवायरस, दैट इज HIV. F मतलब फ्लेवी वायरस, इसमें 6 वायरसेस आते हैं. कौन कौन से? JE, येलो फीवर, डेंगी, जीका, HCV एंड KFD. RFT, T मतलब टोगा वायरस, इसमें क्या आता है? चिकनगुनिया और रूबेला. अदर्स में आप 2 में क्लासिफाई करो, एक में अरेना, बुनिया, ऑर्थोमिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, एंड बाकी में है रैब्डो, फ्लैवी, डेल्टा, कोरोना. So this is about the classification of the viruses.